हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे प्यारे से बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका एक्सरसाइज देखेंगे, जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो ये हमारे 12th क्लास का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 92 पर आ जाइए। ठीक है, पहला हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है ग्रिफ्ट वॉकड ऑन, तो ऑप्शन सी जो है स्ट्रेप्टोकोकी, उसका राइट आंसर है। दूसरा है द मॉलिक्यूलर नाइफ्स ऑफ डीएनए आर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन अकर्स इन, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। चौथा है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आरएनए पॉलीमरेज, वो राइट है। उसके फिफ्थ है ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, डीएनए टू एमआरएनए। ओके, ये याद रखना कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए नहीं मैसेंजर आरएनए तक। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो ए है रेप्लिकेशन, वो राइट है। सेवेंथ है इन द आरएनए मॉलिक्यूल विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन अ प्लेस ऑफ थायमिन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी कोडाउन्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई 3 अमाइनो एसिड, तो आंसर लिखेंगे 3, जो आपका ऑप्शन ए है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ट्राइप्टोफैन ऑपेरॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लेस द फॉलोइंग इवेंट ऑफ ट्रांसलेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो आपको सीक्वेंस में बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। पहले आएगा हमारा पहला, फिर आएगा हमारा चौथा, फिर आएगा हमारा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसलिए राइट है। हमारे सारे एमसीक्यू खत्म हो गए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपका आंसर है आरएनए प्राइमर्स प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट सिंथेसिंग अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई द जेनेटिक कोड इज कंसिडर्ड एज कोमालेस, तो आंसर लिखेंगे जेनेटिक कोड इज कोमालेस, देयर इज नो गैप ऑफ punctuation mark between successive consecutive codons. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोम, आंसर लिखेंगे द टर्म इज जीनोम रिफर्स टू द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इट इज अ complete copy of genetic information DNA or one complete set of chromosomes, monoploid और haploid of an organism। तो आप ये आंसर या तो ये दो ऑप्शन में है, आप जो लिखोगे ना तो आपको इसके जो भी लिख दोगे इन दोनों में से आपको इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विच एंजाइम डज रिमूव सुपरकोइल्स फ्रॉम रेप्लिकेटिंग डीएनए, तो आप आंसर लिखेंगे सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम रिमूव सुपर कोइल्स फ्रॉम रेप्लिकेटिंग डीएनए। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई आर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स फ्रॉम्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ओनली, आंसर लिखेंगे द टू स्ट्रैंड इन डीएनए आर एंटी पैरेलल इज दैट वन स्ट्रैंड रन इन 5 to 3 direction whereas the other runs in 3 to 5. The DNA polymerase synthesize a new DNA strand in 5 to 3 direction only. Leading template is synthesized continuously and lagging template is synthesized discontinuously. Due to 5 to 3 polymerizing activity of DNA polymerase, Okazaki fragments are formed only on lagging strand only. Question number 6 है when does DNA replication take place?
आंसर लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल prior टू सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन टर्म कोडाउन एंड कोडोजन। तो हमें क्वेश्चन में दो बोला गया है, कोडॉन और कोडोजन। तो सबसे पहले हम कोडॉन का देखेंगे। तो अ सीक्वेंस ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA दैट कोड्स फ्रॉम फॉर वन अमाइनो एसिड आर नोन एज एन कोडॉन। Codogen. It is the smallest possible sequence triplet of nucleotides present on the DNA strand which can specify on particular amino acid. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 7 का। 8 है व्हाट इज डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। आंसर लिखेंगे यूज a single amino acid is encoded by a single codon. However, some amino acids are encoded by more than one codon. Example, cysteine has 2 codons while isoleucine has 3 codons. This is called the degeneracy of the code. Degeneracy of the code is explained by the Wobble hypothesis. There, the first two bases in different codons are identical, by the third one varies. उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपको दिया गया विच आर द न्यूक्लियोसोमल कोर हिस्टोन्स। तो आपका आंसर ये रहा द न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स विद H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे देख लिए है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक था सारा कंप्लीट। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। तो आपके आंसर है पहला पॉइंट लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोटिक्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन लाइसिन एंड arginine residues which are basic in nature and are positively charged. These histones organize themselves to make a unit of 8 molecules known as histone octamer. The negatively charged helical DNA is wrapped around the positively charged histone octamer forming a structure known as nucleosome. The nucleosome core is made up 2 molecules of each 4 types of histone protein with H2A, H2B, H3 and H4. H1 protein binds the DNA thread where it enters and leaves the nucleosome. One nucleosome approximately contains 200 base pair long DNA helix wound around it. About 146 base pair long segment of DNA remains present in each nucleosome. Nucleosomes are the repeating units of chromatin, which are thread-like strand body present in nucleus. These look like bead on a string when observed under an electron microscope. DNA helix of 2000 BP wraps around the histone octamer by 3/4 tons. Six such nucleosomes get coiled and then form solenoid that look like coiled telephone wire. The chromatin is packed to form a solenoid structure of 30 nm nanometer बोलते हैं इसको diameter, and further supercoiling tend to form a looped structure called chromatin fiber which further coils and coordinates at the metaphase stage to form the chromosomes. The packing of the chromatin at higher levels need an additional set of protein that are called non-histone chromosal proteins NHC. क्वेश्चन नंबर 2 है एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडाउन। द सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases constitute a codon which specify on the particular amino acid. This base sequence in a codon is always 5 to 3 direction. In every living organism, genetic code is a triplet codon. Genetic code has distinct polarity. Genetic code shows defined polarity is the direction. It is always read in 5 to 3 direction and not in 3 to 5 direction, otherwise the message will change. Example 5 AUG3. Genetic code is non-overlapping. Code is non-overlapping is just such single base is a part of only one codon. Adjacent codons do not overlap. Genetic code is commaless. There is no gap or punctuation mark between successive and consecutive codons.
Genetic code has degeneracy. Usually, the single amino acid is encoded by a single codon. However, some amino acid are encoded by more than one codon. Example: cysteine has two codons, while isoleucine has three codons. This is called the degeneracy of the code. Degeneracy of the code is explained by the verbal hypothesis. Here, the first two bases in different codons are identical, but the third one varies. Genetic code is universal. In most of the living organisms, the specific codon is the same amino acid. Example: codon AUG always by amino acid of methionine. Genetic code is non-ambiguous. The specific amino acid is encoded by a particular codon. Alternatively, two different amino acid will never be encoded by the same codon. Initiation codon and termination codon. AUG is always initiation codon in any and every mRNA. AUG codes for amino acid methionine. Out of 64 codons, 3 codons with AUAA, UAG, and UGA, and termination codons that terminate stop the process of elongation of a polypeptide chain, as they do not code for any amino acid. Codon and anticodon. A codon is part of DNA. Example: AUG is a codon. It is always represented as 5-AUG3. Anticodon is part of tRNA. It always represented as 3UAC5. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आंसर लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है. In forensic science, DNA fingerprinting is used to solve problems of rape and some complicated murder cases. DNA fingerprinting is used to find out the biological father of mother or both of the child in case of disputed parentage. DNA fingerprinting is used in the pedigree analysis in cats, dog, horses and humans. हमने अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आंसर बताया आपको. ठीक है, अब इससे ना एक जीके की बात बता देती हूँ. ठीक है, जो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया में जो है, यानी इंडिया में जो है, उनका नाम है डॉक्टर लाल सिंह जी, जिन्होंने बताया था इंडिया में. ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज इन लैक ओपेरॉन. A few molecules of the lactose enter into the cell by enzyme permease. A small amount of enzyme is present even when the operon is switched off. A few molecules of lactose act as inducer and bind of the repressor. The repressor inducer complex fails to join with the operator gene, which is then turned on. Structural genes produce all enzymes, thus lactose acts as an inducer of in its breakdown. 6 है, when the inducer level falls, the operator is blocked again by the repressor, so structural genes are repressed, inactivated again. This is negative feedback. तो हमारा आंसर यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सब एंड होता है और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. पहला है, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP. HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. आंसर लिखेंगे, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1919 under the International Administration of the Human Genome Organization HUGO. This project was coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health. Additional contribution includes universities across the United States and international partners in the United Kingdom, France, Germany, Japan, and China. The Human Genome Project was completed in 2003. Following are the main aims of the Human Genome Project: mapping the entire human genome at the level of nucleotide sequence, to store the information collected from the project in databases, to develop tools and techniques for analysis of the data, transfer of the related technologies to the private sector such as industries, taking care of the legal, ethical, and social issues which may arise from the project. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन.
आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ द operon was the first proposed by Jacob and Monod. A unit of genetic material, the function is coordinated manner by means of a regulator, an operator, a promoter, and one of more structural genes that are transcribed together is called an operon. The clusters of genes with related function are called operon. देखो ये नेम याद रखना है कि फर्स्ट प्रपोज किसने बताया था, तो जैकोब एंड मोनोड नाम, ठीक है, उनका याद रखना, ये होता है आपको एमसीक्यू में पूछेंगे 1 मार्क्स के लिए. Components of operon. First, regulator genome. This this genome controls the operator genome is cooperation with an inducer represent in the cytoplasm. The regulator genome parasites the promoter gene. It may not be present immediately adjacent to the operator gene. The regulator gene produced a protein called a repressor protein. The repressor binds with the operator genome and represses its action. Therefore, it is called regulator protein. Second, a promoter gene. This gene precedes the operator gene. It is the present adjacent to the operator gene. RNA polymerase enzyme binds to promoter gene. The promoter gene basis sequence determines which strand of DNA acts a template. When the operator gene is turned on, the enzyme moves over the operator gene and transcription of a structural gene starts. Operator gene. This gene lies adjacent to the structural genes and controls their functionality. When the operator gene is turned on by an inducer, the structural genes produce mRNA. The operator gene is turned off by product of the repressor gene. A structural gene. When lactose is added to the E. coli culture, the structural gene produce mRNA, which in the turn produce polypeptide on the ribosome. The polypeptides formed act as enzyme to metabolize lactose in the cell. There are 3 structural genes in the sequence, LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A. Enzymes produced by these genes are B. Galacetosidase, A. permease, and transactylase, respectively. Question number 3. In the figure below, A, B, and C are 3 types: uracil, ribosome, amino acid. तो आपको ये बताना है किस मतलब डिफरेंट टाइप्स बताए हुए यहाँ पर. चलिए इसके आंसर देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा था कि इन द फिगर बिलो ए बी एंड सी आर 3 टाइप्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको मालूम है फिल करना है, राइट. तो हमको यहाँ पे यूरासिल दिया था, राइबोसोम और अमाइनो एसिड दिया था. तो विच टाइप्स, तो 3 टाइप्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, ठीक है. तो लिख लीजिए इसका आंसर. उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइडेंटिफाई द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन. और पार्ट ए इज द, पार्ट बी इज द और पार्ट सी इज द. तो व्हाट क्या है यहाँ पे, देखो आप ए बी और सी आपको दिख रहे होंगे, तो ये पार्ट आपको बताने हैं कि क्या है ये, ठीक है. चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन देखे आप लोग डर गए होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर कितना बड़ा होगा. बस शॉर्ट है. आपको पार्ट ए दिया है, तो पार्ट ए, एक सेकेंड, तो पार्ट ए इज द लिखेंगे एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन द एंटीकोडॉन लूप ऑफ tRNA, ट्रांसफर RNA. दूसरा है पार्ट बी इज द, तो पार्ट बी इज द लिखेंगे अमाइनो एसिड. उसके बाद पार्ट ए है, सॉरी पार्ट सी है, यहाँ पे ए लिख गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पार्ट सी में कि पार्ट सी इज द लार्ज सब्स्टिट्यूटर, सॉरी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, तो पहला में लिख देंगे यहाँ पर हम लोग कि एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन द एंटीकोडॉन लूप ऑफ tRNA. दूसरे में लिखेंगे अमाइनो एसिड, तीसरे में लिखेंगे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मैच द एंटायर्स इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर. हम सॉल्यूशन देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2. ए है अल्कली ट्रीटमेंट, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग स्प्लिट, जो आपका ऑप्शन मतलब दूसरा दिया था वो लिखेंगे हम लोग स्प्लिट DNA फ्रैगमेंट्स इनटू सिंगल स्टैंड. इसका आंसर इसके सामने लिखेंगे. तीसरा है, सॉरी दूसरा है हमारा साउथर्न ब्लॉटिंग, तो आंसर लिखेंगे DNA ट्रांसफर टू
नाइट्रोसेल्यूलोज शीट। सी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आंसर लिखेंगे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ जेल स्लैब। डी है पीसीआर, तो आंसर लिखेंगे डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ई है ऑट्रो रेडियोग्राफी, तो आंसर लिखेंगे एक्सरे फोटोग्राफी। और एफ है डीएनए ट्रेड विथ रेन, तो आंसर लिखेंगे प्रोड्यूस फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो जो कॉलम 1 था, जो भी उसका आंसर था, कॉलम 2 में से कौन सा आएगा, हमने उसका आंसर यानी इसका आंसर इसी के सामने, इसका आंसर इसी के सामने किया, यानी इससे आपको भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, जिसका आंसर उसके सामने ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। और आपको एग्जाम में भी आएगा मैच द फॉलोइंग, तो जिसका आंसर जो रहेगा उसके सामने ही लिखना है। आप जो लगाते हो ना ऐसे ऐसे कर करके, वो नहीं लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर आपको मार्क्स देने वो नहीं देता है, कट कर देता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट कर लेता है। कहीं कहीं तो वो देता ही नहीं, भले आप राइट लिखो, तो आप जिसका आंसर है उसके सामने ही लिखते हो ना, यानी इसका आंसर ये है तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह। तो अगर ऐसे लिखते हो आंसर में तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्योंकि अब तक तो आपका पहले शॉर्ट ही सब चल रहा। पहला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका आंसर ना काफ़ी लॉन्ग है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ मिस हो जाए तो रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस by which DNA duplicates to from identical copies is known as replication. Semi-conservative uh, method of replication. After replication, each daughter DNA molecule has one old and other new strand. As parental DNA is partly conserved in their daughter's DNA, the process of replication is called semi-conservative. The model of semi-conservative replication was proposed by Watson and Crick. The semi-conservative model of DNA replication using the heavy isotope of nitrogen N15 and E. coli was experimentally proved by Miselon and Stell in 1958. Mechanism of replication is as below. Activation and nucleotides. The four types of nucleotides of DNA is that DAMP, DGMP, DCMP, and DTMP are present in the nucleoplasm. They are activated by ATP is presence of an enzyme phosphorylase. This results in the formation of deoxyribonucleotides. Triphosphates is that DATP, DGTP, DCTP, and DTTP. The process is known as phosphorylating. B है point of origin of initiation point. The application begins at a specific point O origin and terminates at the point T. Origin is flanked by T-sheet. T-sheet, the unit of DNA in which replication occurs is called a replicon. In prokaryotes, this is only one replicon. However, is eukaryote there are several replicon in tandem. At the point O, enzyme endonucleases nicks one of the strands of DNA temporarily. The nick occurs in the sugar phosphate backbone or the phosphodiester bond. C है unwinding of DNA molecule. Enzyme DNA helicase breaks weak hydrogen bonds in the vicinity of O. The strand of DNA separate and unwind. This unwinding is bidirectional and continuous as Y-shaped replication fork. Each separated strand acts as a template. The two separated strands are prevented from recoiling by SSB. SSB protein remains attached to both the separated strand for facilitating the synthesis of new polynucleotide strand. Replicating fork. The point formed due to the unwinding and separation of two strands appears like a Y-shaped fork called replication fork. The unwinding of a strand imposes strain which is relieved by the superhelix relaxing enzyme. Synthesis of new strand. Each separated strand acts as mold of template for the synthesis of a new complementary strand. It requires a small RNA molecule called RNA primer. RNA primer attaches to the three ends of the template strand and attract complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm.
These nucleotides bind the complementary nucleotides on the template strand by forming hydrogen bond is that A equal T और T equal A, G equal C और C equal G. ये पैरिंग याद रखना, ठीक है. The newly bound consecutive nucleotides get interconnected by phosphodiester bonds, forming a polynucleotide strand. The synthesis of a new complementary strand is catalyzed by enzyme DNA polymerase 7th point है. The new complementary strand is always formed in 5 to 3 direction. If point अब आता है leading and lagging strand. The template strand with free 3 and is called a leading template and which free 5 and is called a lagging template. The process of replication always started at the C3 end of the template strand and pursued towards C5 end. As the both strands of the parental DNA are antiparallel, new strands are always formed in 5 to 3 direction. One of the newly synthesized strand which develops continuously towards the replicating fork is called lagging strand. Another new strand develops disconnectedly away from the replicating fork and is called the lagging strand. Maturation of Okazaki fragments DNA synthesis of the lagging template takes place in the form of small fragments called as Okazaki fragments. Okazaki fragments are joined by the enzyme DNA ligase. RNA primers are removed by DNA polymerase and replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase alpha in eukaryotes. Finally, DNA gyrase enzyme from a double helix to form daughter DNA molecules. Formation of daughter DNA molecules. At the end of replication, two daughters DNA molecules are formed. इसके आगे और आंसर है, मैं आपको बताती हूँ. उससे पहले ना आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस एस ही आ गया हुआ है ना, इसलिए मुझे एक बात भी याद आ गई. देखो यहाँ पे लिगेज दिख रहा है, पॉलीमरेज दिख रहा है, गैरेज दिख रहा है. जिनके नेम के आगे ए एस ई रहेगा ना, तो समझ जाना कि वो क्या है, एंजाइम है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इन विच डॉटर्स डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड द अदर इज टोटली न्यूली सिंथेसाइज्ड. Thus, 50% is contributed by mother DNA, hence it is described as semi-conservative replication. और ये स्ट्रक्चर बता देना डीएनए रेप्लिकेशंस का, ठीक है. तो फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस. Answer: the process of copying of genetic information from the template strand of DNA into a single stranded RNA transcript is called the transcription. The process of transcription is as follows. For transcription, promoter, structural gene, and terminator are required. The DNA strand used for the synthesis of RNA is called antisense of template strand, which is oriented in 3 to 5 direction, while the other strand not involved in RNA synthesis is called the coding strand. It is oriented in 5 to 3 direction. A small DNA sequence which provides a binding site for RNA polymerase is called promoter, which is present towards 5 end upstream, while a small DNA sequence which terminates the transcription process called terminator is present towards 3 and downstream. The process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes involves 3 stages with initiation, elongation, and termination. During initiation, RNA polymerase binds to promoter and moves along the DNA and causes local unwind of DNA duplicates into two chains in the region of the gene. Exposed ATGC bases projects into the nucleoplasm. Only one strand functions as template and the other strand is complementary, which is actually a coding strand. During elongation, the ribonucleoside triphosphates join bases of the DNA template chain. As transcription proceeds, the hybrid DNA RNA molecule dissociate and makes mRNA molecules free.
As transcription proceeds, the hybrid DNA RNA molecules dissociate and makes mRNA molecules free. Question number 3 है describe the process of translation in protein synthesis. देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर सेम ही है, बस खाली क्या है ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे दिया है ट्रांसलेशन. तो ध्यान देना जब आपको एग्जाम में आएगा तो पूछ कौन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन. और दोनों का इसी में पूछ रहा है, प्रोटीन में ही पूछ रहा है दोनों का भी. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम उसका आंसर देखेंगे. आंसर है द ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म इन विच कोडॉन्स ऑफ mRNA आर ट्रांसलेटेड and specific amino acid in the sequence from a polypeptide on ribosomes. The process of translation requires amino acid mRNA, tRNA, ribosomes, ATP, Mg++ ions, enzymes, elongation, translocation, and release factors. About 20 different types of amino acid available in the cytoplasm are known from to protein. DNA controls the synthesis of proteins having amino acid in the specific sequence. This control is possible through the transcription of mRNA. Genetic code is specified for the particular amino acid. RNAs serve as intermediate molecules between DNA and protein. Ribosome serves as a site for protein synthesis. Each ribosome consists of large and small subunits. These subunits occur separately in the cytoplasm only during protein synthesis in presence of Mgg plus ions. These two subunits get associated together. Mechanism of translation. It involves three steps: initiation, elongation, and termination. Initiation. Activation of the amino acid is essential before translation into a. The amino acid is activated by utilizing energy from ATP molecule. This amino acid bind with the amino acid binding site of tRNA and forms of tRNA amino acid complex. A small subunit of ribosome attached to mRNA at 5' end. The initiator codon AUG is present on mRNA which initiate the process of protein synthesis. Initiator charge tRNA binds with the initiation codon through hydrogen bond. It carries activated amino acid methionine. It copies the P site of the ribosome and the A minus the site is vacant. Now the large subunit of ribosome joins with the smaller subunit that requires Mgg plus ions. Elongation. During the process, activated amino acid and added one by one to first amino acid. Addition of amino acid occurs in three-step cycle. First, codon recognition. Amino acid tRNA molecule enters the ribosome at the A site. Anticodon binds with the carbon by hydrogen bonds. Amino acid on the first initiator tRNA at P sites and amino acid on tRNA A site joined by peptide bonds. Here enzyme ribosome acts as a catalyst at the time first RNA at P site it is kicked off. Translocation. The RNA is at A site carrying a dipeptide at A site moves to P site. The process is called translocation. Is in translocation both the subunit of ribosome moves along in relation to tRNA and mRNA. Hence tRNA carrying dipeptide now gets positioned at P sites of ribosome making A site vacant at this site. The next charged tRNA molecule carrying amino acid will be received during this process. The first uncharged tRNA is discharged from E sites. This process of arrival of tRNA amino acid complex, the formation of the peptide bond, ribosomal translocation, and removal of the previous tRNA and repeated termination and release of polypeptide. Towards the 3 to end of mRNA, there is a stop codon. It is exposed at the A side. It is not read and joined by anticodon of any tRNA. The release factor binds to the stop codon, thereby terminating the translation process. The polypeptide is now released in the cytoplasm. Two subunits of ribosome dissociate and last tRNA is set free in the cytoplasm. mRNA also has some additional sequence that are the not translated and are referred as untranslated regions. The UTRs are present at the both 5 ends at and at 3 and
They are required for an efficient translation process. Finally, mRNA is also released in the cytoplasm. It gets denatured by nucleuses immediately, hence mRNA is short lived. चलो फाइनली हमारा भी जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था खत्म हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द लैक ओपेरॉन. आंसर लिखेंगे lactose or lactoperon of E. coli in an inducible operon. The operon is switched on when a chemical inducer lactose is present in the medium. Second point is Jacob and Monad proposed the classical model of lactoperon. The lactoperon consists the promoter, regulatory, and operator site. It also has three structural genes, namely ZY, and each producing an enzyme. The following three enzymes are required for the metabolism of lactose in the cell. Name of gene, enzyme produced, function. LacZ, B galactosidase, B lactose, LacY permease, entry of lactose in the cell. LacA trans acetylase, transfer acetyl group from acetyl CoA to beta गैलेटोसाइड सेज. तो देखो ये फंक्शन से ये सब लिख लीजिएगा आप लोग. उसके बाद हमारा इसके आगे का है इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल दे विल रिक्वायर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज लैक्टोज. द इफ लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल द रिपर्सर protein produced by repressors gene will attach to the operator and block mRNA polymerase. Lactose acts as the inducer. If lactose is available, it will prevent the repressor from binding the operator by forming an inducer repressor complex and allow RNA polymerase to transcribe mRNA. RNA polymerase will attach to promoter and will begin transcribing mRNA. RNA polymerase first transcribes the LacZ gene, which is responsible for synthesizing B galactosidase. RNA polymerase moves on to next gene, LacY, the synthesis the enzyme permease. RNA polymerase finally moves to LacA gene that the responsible for the synthesis trans acetylase. Beta galactosidase, permease and transacetylase are enzymes in the metabolic pathway used to get energy from lactose. After lactose is used up to levels decreases, the preparation will attach to the operator blocking the production of beta galactosides, dase permease and transacetylase so that lactose levels increases. यहाँ पर जो हमारा फोर्थ था इसका आंसर कंप्लीट हुआ. फिफ्थ है हमारा जस्टिफाई द स्टेटमेंट विल इफ द आंसर इज फॉल्स चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. तो सबसे पहले हमें दिया गया था द DNA मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड एंड द RNA मॉलिक्यूल्स इज सिंगल स्टैंडर्ड. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फिर भी हम इसका आंसर बताएंगे क्या है, क्यों है. स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रू है. पहला पॉइंट लिखेंगे द DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रेजर्विंग इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स दस इज नीडेड टू बी स्टेबल एंड रेसिस्टेंट टू एंजाइमेटिक और oxidative alternation. The double stranded DNA molecule is designed at for part of the stores the genetic information. The nitrogenous bases pairs are stacked inward. Phosphate groups keep the base pairs safe inside from the backbone. DNA is further wrapped up around histone proteins into chromosome which keep it up contains. This would not be possible if were only single stranded. RNA is not meant to last long and acts as template carrying information which is copied from the DNA using protein synthesis machinery it from a protein after which is destiny generates and digested. सेकेंड था द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स एट द राइबोसोम. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. Ribosomes are sites for protein synthesis. Ribosome is responsible for holding mRNA in correct position. Therefore, the process of translation occurs at the ribosomes. थर्ड है
The job of mRNA is to pick up amino acid and transport them to द राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर लिखेंगे इसका क्यों फॉल्स है। द जॉब ऑफ tRNA is to pick up amino acid and transport them to ribosome. mRNA carries message in the form of code from DNA. फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन मस्ट अकर्स बिफोर ट्रांसलेशन मैनी में अकर। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट वो ट्रू है। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA whereas translation is a process of protein synthesis. For protein synthesis, mRNA is required to act as a template. Therefore, transcription must occur before translation may occur. क्वेश्चन नंबर 6 दिया है गेस वन द पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA वन ऑन द कलेक्टेड एविडेंस फ्रॉम अ क्राइम सीन एंड सेकेंड द पॉसिबल सोर्स ऑफ DNA। तो यहाँ पे एविडेंस दिया गया है, पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA ऑन द एविडेंस दिया गया और सोर्स ऑफ DNA दिया गया है। तो हम करेक्ट जोड़ियाँ मिला लेते हैं इनकी भी, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ओके। आंसर लिखेंगे सबसे पहले, तो आपको भी उसी तरह 3 कॉलम बनाना होगा, एविडेंस, दूसरा पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA ऑन द एविडेंस और तीसरा सोर्स ऑफ DNA। तो एविडेंस में देखेंगे हम आई ग्लासेस और इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल गिवन ईयर पीसेस और इसमें स्वेट और स्किन और इसमें लिखेंगे बॉटल कैन ग्लास, स्लाइड माउथ पीस, स्लाइवा स्वेट, डोर बेसबॉल बैट है, सिमिलर वेपन। अब आप एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, नोटिस करने की कर लिए किए होंगे आप लोग ने कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर डार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर डार्क लिखा हुआ है, यहाँ पर डार्क से लिखा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर जगह क्या है, ब्लैंक दी गई है और आपको वहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको फिल वाला ही बता देते क्योंकि ऑलरेडी तो सब लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको एक दिया गया यहाँ पर पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA ऑन द एविडेंस में लिखना होगा पर्सन स्किन और क्लॉटिंग, और सोर्स ऑफ DNA में जगह जो खाली है वो है स्लाइवा, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंकेट, पिलो, बेडशीट, डर्टी लॉन्ड्री, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हम पहला जो है हमारा पहला कुछ नहीं खाली है, दूसरे में यहाँ पे खाली है स्लाइवा स्वेट लिखेंगे, थर्ड वाले में सोर्स ऑफ DNA में, उसके सोर्स ऑफ DNA की उसके बाद है ना उसके ही फोर्थ नंबर पे स्लाइवा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एविडेंस में एक ही खाली, दो खाली है, डोर, बेसबॉल, बैटर, सिमिलर वेपन। फिर जो लास्ट है आखिरी का सातवां आपको कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे दिया गया ब्लैंकेट, पिलो, बेडशीट, डर्टी एंड लॉन्ड्री। उसके बाद पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA ऑन द एविडेंस में एक ही जगह खाली है जहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्सन स्किन और प्रोटीन, ठीक है। तो ये फिल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा आप लोग के लिए। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं बोलते तो आप लोग करते भी नहीं हो, तो प्लीज़ कर दिया करें आप लोग। और वीडियो जैसे शेयर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, ओके। और आप कमेंट सेक्शन में आपको कोई अदर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसको भी कर लीजिएगा। बाकी हमारे प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की नहीं रही तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, सारे डाउट्स अपने क्लियर करने, सारे क्वेश्चन के आंसर देखने। तब तक के लिए चलते हैं, बाय एंड टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा या तो फिर ऊपर आई बटन पे आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे।